Hi everyone, hi my dear lovely students, very good evening, good afternoon, good morning, whenever you're watching this video. I welcome you all to an amazing session of Conics. How are you guys? So yeah, this was supposed to happen live and I did come live, but due to some technical issues, we had to cancel the session. But yes, we are back again with this premiered session. It's a premiered session. I don't want to hide anything from you, but yes, we'll learn a lot through this lecture, and the most awaited session, the most awaited lecture of conics is here. This is episode 1 of conics, and I will tell you what is my plan for this chapter. So today is the episode 1. Let me change the color, and day after tomorrow, today is Monday, right? Day after tomorrow, Wednesday, will be having the episode 2, and Friday will be the mega mentee quiz. So entire week's plan is right there in front of you. In this week, we are going to capture the conics chapter full, right? So be ready to do conics this entire week. Prepare well for the mentee quiz. And yes, in today's class, basically in episode 1, we are going to tackle three things. The very first thing, of course, is the introduction to conics. I'm going to introduce conics to you in a very beautiful way through animations, through images, objects, and so first will be introduction to conics, and then we will start with circle and parabola in today's class. The episode 2 will consist of ellipse and hyperbola. Ellipse and hyperbola. क्या बोला? Hyperbola. ठीक है, this will be your episode number 2. So this is how I have divided the two sessions. We'll be taking all the questions from your NCERT miscellaneous exemplar, a mixture of all of them along with some amazing examples. Alright, so yes, we are going to soon start with this amazing chapter. Let me tell you, these are all the topics which come under conics section. So stay tuned for a very interesting introduction of conics. Let me just check it out. Yes. So hi everyone, for those who don't know me, this is Varsha, your mathematics teacher on Vedantu NCERT 11-12 channel, and I have 4 years of teaching experience. I love teaching, and I say maths is love, love is NCERT, because NCERT is the essence of everything. Whatever you want to do, no matter JEE या फिर जो भी कर रहे हो आप, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो यार, एनसीईआरटी बिना पढ़े तो कुछ होने नहीं वाला. We all know that very well, right? So if you haven't joined the Telegram group, for those who are coming for the first time, do join our NCERT Telegram group so that you stay updated with everything that's happening around. Okay? Also, if you feel that our efforts are worth a like, do give a like, share, and subscribe amongst your friends. You can write it out to me anytime. I will respond to your mails. Yes. So guys, as you know, the pandemic is on and there's no end to it. We cannot predict what's going to happen. So 11th class students, if you're preparing for 2022 NEET and JEE exam, Vedantu is here to support you full form in your preparation. You can join the active Vedantu platform, which will give you the best site to learn, to get your goal accomplished. Yes guys, so a lot of features, like so many live lectures, so many wonderful amazing teachers with great experience all across the nation will come and teach you on the same platform. The best part is that you have instantaneous live doubt solving. You don't have to wait in a queue for live doubt solving, right? It will be done immediately. Doubt आया, clear हुआ, move ahead. So that's the best part of this. English Hindi language barrier is not there. No more any language problems. Also, each subject will be covered in extreme detail. As I said, the teachers are so well that they will cover everything in detail for your NEET and JEE preparation. Whatever is required, all the testings and assignments, comprehensive notes will be provided to you after every session. The testing will give you the overall ranking where you are. Continuous feedbacks and all these things will happen because we believe that you should learn from home. You should stay safe. So yes, for availing all these things, you get a 20% discount
and the rates after the discount for 1 month, 3 months and 6 months are here in front of you. If you want to take this subscription, you will have to go to the site vdnt.in/ytpro. This link has been provided in your description box. Go and check out now. You can enroll for this. Go to the link, select the course, JEE, NEET, CBSE, whatever, 11, 12, 13. Apply the coupon code. Do not forget, you can apply any teacher's code, but do apply the coupon code for getting instantaneous 20% का discount आपको मिल जाएगा. Right? So yes, this is how you enroll for Vedantu Pro Classroom, for Vedantu Pro subscription. Alright, so let's start with what is conics. What is conic? Anybody ask you, any of your friend comes and asks you, what is conics? So how will you explain? अच्छा, I told this before also, I will repeat it again. आज सुबह से हम लोग ये conics के PPT पे काम कर रहे हैं. It happens every day. Actually, it happens with every lecture. कि हर जो भी lecture होता है यार, 4 बजे lecture होता है तो हम सुबह से ना काम करते हैं उसके ऊपर कि we should give the best content to our students. Best content, best PPTs, best material, best output. Which questions to take, which questions to not take. The entire time sits and like breaks the head over and out. So yes, lot of efforts have been taken. So please do like the lecture, like the video right now. So that will really help us, motivate us a lot. And let's start with conics. So the definition says the curves obtained by intersecting right circular cones with the plane. When you intersect a plane and a right circular cone, what do I mean by that? Let me explain. Suppose if I take a random axis, I just take a straight line axis which is fixed, it's not moving, and then I take another line. Now this line is rotating along this fixed axis. So suppose this is the fixed axis, my hand, right, and this line is rotating along it, rotating 360 degree ऐसे ये line के across. So what kind of a figure it will form? Can you imagine? थोड़ा सा imagine करिए. It will form a figure something like this. A right circular cone it will form. Now let me introduce to the different parts of this cone. Right, there is a fixed axis. Imagine it's passing through the center point. Now I'll name them. Let us call this as the axis of the cone. The central point which is fixed is called as vertex. Now whatever you are revolving है ना, ये line को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, तो since you are rotating it and generating something, it is known as the generator. It is known as the generator, right? Now there are two halves, the upper triangular and the lower triangular. These are called as nap. What are they called as? Nap. The upper nap and the lower nap. These are the two naps. Also, the angle between the generator and the fixed axis. The angle between the generator and the fixed axis is called as alpha. This angle is alpha. Now, based on this basic information, I am going to introduce different conic sections. मतलब एक plane लेंगे है ना? You all know what is a plane. Just take any plane. This hand is a plane right now. You are introducing this plane. You are intersecting this plane to this double napped structure. This is called as a double napped structure because there are two naps. You're going to intersect this plane to this double napped structure at different angles, है ना? अलग अलग एंगल पे आप इसको इंटरसेक्ट करने वाले हो और फिर आप देखोगे what is the cross section that you are obtaining. For example, have a look at this GIF once. There's a plane moving, then it turns more, then it turns more. You're getting different figures. So what figures are you getting is being seen on the right. Just look at the right side. The plane is moving and the cross section is on circle, ellipse, parabola, hyperbola, pair of lines, straight line, point, and then a circle. So you can see my plane is being moving, cutting the double nap structure, and we are getting different figures. So let me also tell you this mathematically. Right now, if you look at this curve, is this cone and the plane. This is cutting perpendicularly. So let us call the angle between plane and axis. Let us call the angle between plane and axis as beta.
मैंने बोल दिया उस एंगल को बीटा। तो यहाँ पे ये एंगल बीटा कितना है बेटा 90 डिग्री। सो व्हेनेवर इज योर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री you get a circle. This cross sectional area is a circle. ठीक है, this angle is alpha. Do not forget this angle between generator and axis is alpha. So whenever beta is 90 you get a circle. नेक्स्ट देख लो एक बार, सर्कल आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिप्स कैसे मिलेगा। एलिप्स के लिए आपको थोड़ा सा प्लेन को कर्व ऐसे ना थोड़ा सा मूव करना होगा, नॉट परपेंडिकुलर बट अ लिटिल टिल्टेड। So the condition for this is your beta is greater than alpha but less than 90 degree. It should not be 90, है ना, your plane should not be at 90 degree, but alpha भी नहीं होना चाहिए। alpha मतलब एकदम इसको parallel plane नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा plane नहीं चाहिए बिल्कुल parallel to this, no, a little greater than alpha but less than 90. So whenever you have such a cross section, this figure forms an ellipse, you can see, right? Moving on to the next figure which is parabola. parabola में देखिए, can you see the plane and this, the plane and the generator are parallel to each other, which means your alpha and beta are equal. Whatever is the angle alpha, the angle between the axis and the generator is the same angle between the plane and the generator. बिल्कुल से पैरेलल होगा। जो भी आपका जनरेटर है उसके पैरेलल में आप कट कर दो, आपको जो भी डायग्राम मिलेगा वो पैराबोला है। हैव अ लुक, हियर इट इज पैराबोला, getting it. And last one is beta hyperbola. Hyperbola, now hyperbola cuts the double nap cone into two naps. अब तक जो भी देखा बेटा आपने उसको एक ही नैप में कट किया, या तो अपर नैप और दी लोअर नैप, बट व्हेन योर plane is cutting both the naps from one base to other, we get a hyperbola. So now here, what is the angle beta? Your beta is greater than 0 and less than alpha. अल्फा से छोटा होगा। अल्फा आप सब जानते हैं क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन जनरेटर एंड एक्सिस, तो उससे भी छोटा, राइट? देख लीजिए डायग्राम में, अभी इट्स गोइंग टू कम। इट्स अ पॉइंट, अ सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला एंड नाउ इट्स अ हाइपरबोला। तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेन था इट केम इनसाइड, मतलब वो जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, वो एकदम से छोटा हो गया, है ना। दिस इज द एंगल बीटा, दिस इज इवन लेस देन अल्फा। तो ये जो बीटा है इट शुड बी लेस देन अल्फा, देन यू गेट अ हाइपरबोला। दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस। ये जो पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दीज आर डीजेनरेट केसेस, मतलब स्पेशल केसेस। जैसे कि ये केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, पॉइंट बन गया, तो ये स्पेशल केसेस है। Now these sections are called as conic sections. And as I discussed today, we are going to start with circle and parabola. Circle. Now what is the definition of a circle? अगर आपको किसी को भी बताना है circle क्या होता है, तो circle का बेटा एक simple सा definition है. It is the collection of all points which are equidistant from the center. Can you see? If this is your center C, all the points are equidistant from the center. The locus of all the points which are equidistant, which are at fixed distance from a point. ठीक है, ये हुआ डेफिनेशन। अब इसी से इसका इक्वेशन बनेगा बेटा, इसी से इक्वेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द सेंटर इज h, k, हम जनरली सेंटर को बेटा h, k लेने वाले हैं। सो लेट द फिक्स्ड पॉइंट बी कॉल्ड एज सेंटर and the distance which is fixed, let us call it as radius. ठीक है, so if your center is h, k and this is a radius, let us take any point on the circle x, y. So by distance formula, what will be the equation? X minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Isn't it the distance formula? y2 minus y1 the whole square plus x2 minus x1 the whole square is equal to distance square. Like just O is equal to r, by the way. When you open it, you will get x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. And this is the equation of circle. This is the equation of circle in center radius form.
This is the equation in center radius form. Why center radius? Because we know the center, we know the radius. Just substitute in this equation and you get the answer. अच्छा, एक special case. What will happen if your circle का center is at the origin? ये जो center है ना बच्चा, ये origin पे है 0,0, मतलब h और k है 0. H and k is 0. So in this equation 1 you will substitute your h and k as 0. अगर आपने h और k को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिलेगा बच्चा? यही मिलेगा x² plus y² is equal to r². This is the standard equation of a circle. Standard because center is at the origin. We all know if the radius is equal to 1, it is called as a unit circle. Don't we know this? Yes, we know. So a circle having center at origin is called as a standard circle, and its equation is x² plus y² equal to r². R is the radius. This is the center radius form. This is the center radius form, x minus hd whole square plus y minus kd whole square equal to r². With this information, we are good to go to the questions. In general, also I'll say you something extra. General equation of a circle. General equation of a circle. है ना? It is obtained from center radius itself. It's x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now this is the equation that I have obtained after I open this. इसको आप open करोगे ना h और k को in general, तो उसी को यहाँ पे g और f एक नए terms आए हैं. Now you learn about this more later on. जो बच्चे जेई करते होंगे ना उनको शायद इसका आइडिया बहुत अच्छे से होगा. NCERT does not go into this all पंगा. NCERT बोलता है भाई x minus h y minus k स्टोरी होगा. But yes, whenever you encounter such type of equation, समझ जाइए वो सर्कल का है. दो चीजें ध्यान में रखनी है. x and y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. The coefficients of x² and y² should be same. मतलब it can be 1 1, it can be 2 2, it can be 3 3, it can be 4 4, anything. So one thing, that is coefficient of x² should be equal to coefficient of y². ये चीज दिखी, it's a circle. These are extra things that I am telling you guys. Second thing, there will be no xy term. कोई xy term दिख रहा है क्या आपको? Like 3xy, 4xy, ऐसा कोई term होगा ही नहीं. There will be no x into y term in the equation. You will have x² y², you will have an x term, you will have a y term, you will have a constant. So this is how you will identify it's a circle का equation. ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखोगे ना, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा पढ़ने में. सॉल्व तो सब कर लेंगे, बट थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा. सो योर द इक्वेशन इज x² plus y² plus 8x plus 10y minus 8 equal to 0. I can see the coefficient of x² and y² are equal and there is no xy term. So this is equation of a circle. Find the center and radius. Center और radius निकालना है बच्चों. कैसा? What is the procedure? Let's look. I am trying to bring it in this format. I am trying to bring it in the center radius format so I can compare and tell भाई ये center है h और k. कैसे लेकर आए उस फॉर्मेट? x² plus 8x plus y² plus 10y equal to 8. यहाँ तक मैंने किया फर्स्ट स्टेप. x वाले टर्म्स, y वाले टर्म्स. Now x² plus 8x plus, now I am going to add and subtract something in this. तो यहाँ पे मैं बच्चों ऐड कर रही हूँ half into coefficient of x the whole square, which is 16. So I am going to add 16. तो RHS में भी 16 को ऐड कर दीजिए, है ना. बैलेंस तो करना पड़ेगा यार, लेफ्ट में किया तो राइट में भी करो. वैसे यहाँ पे y² plus 10y, what should I add and subtract? So half into coefficient of y the whole square, which is 5 square 25. So I am going to add 25 to both the sides of equation to balance it. फायदा क्या हुआ? ये क्या हुआ? x plus 4 whole square. I hope you all know x square का x, 16 का root 4. So it's x plus 4 whole square plus y square का root y, 25 का root 5. So y plus 5 whole square, and this comes out to be 24 plus 25, 49. To write it in a better way, I will write it as x minus of minus 4 the whole square
plus y minus of minus 5 the whole square is equal to 7 square. Now you compare this equation with x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. What do you get h? What do you get h? h is equal to, compare, h is minus 4 and k की value क्या आती है बेटा? K is minus 5 and what is your radius? It's 7. So that's how we solve for h, k and r. H and k becomes the center. So finally the center of the circle is minus 4 comma minus 5. Done? Alright. Cool. Couple of more concepts before I proceed ahead. Now you may have circles, you may have certain circles which is touching the y-axis. And it is touching the y-axis. X-axis को intersect कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, but it is simply touching the y-axis. And center can be anywhere. Yeah. So center can be anywhere. फिलहाल यहाँ पे इधर है center. X-axis को touch कर रहा है, intersect कर रहा है. You don't bother about that. I'm just saying a circle touching the y-axis. So what can you talk about the center? H, K के बारे में क्या बोल सकते हैं? Since the circle is touching the y-axis, can I say ये जो distance है, that is the radius. Center से लेके ये m तक. cm is the radius. So can I also say ये जो distance है, that will be the x coordinate of the center, यानी कि it will be r, k. The center cm is the radius. But that radius is also equal to the x coordinate of center. है ना? So h is equal to r when the circle is touching y-axis. Similarly, we can have a scenario where the circle is touching the x-axis. Something like this. Something, okay, go back. Okay, yeah, right. So now if you try to calculate what will be the center, this distance, let's say cm, your cm is the radius as usual. But we can also say that cm becomes the y coordinate of the center. So k will be equal to r because ये जो distance है cm वही तो radius है ना? तो ये जो c का x coordinate तो h है center का, but y coordinate कितने दूर है? It is equivalent to the radius. So k is equal to r. You may have a special case. Where the circle is touching both the x and y axis. Something like this, है ना? This, and this is your center. Now if you draw the perpendiculars, यार, center क्या होगा? It will be r, r, isn't it? मतलब जितना radius है उतना ही center होगा. Right? Yes. So these are the different types of circles that you may encounter. कि circle is touching y-axis, circle is touching x-axis and so on. तो touch कर रहा है मतलब आपको समझना है कि if it is touching y-axis, your h is equal to r. If it is touching x-axis, your k is equal to radius. Radius होगा k coordinate of the center. Radius क्या होगा बेटा? K coordinate. पूछा radius क्या है? Center का k coordinate. पूछा radius क्या है पहले वाले circle में? तो radius will be the h coordinate of the center. Right, let's move on. Find the equation of circle whose center and radius is given. Very simple equation of circle with center radius form is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. From the question, h comma k is given to be equal to half comma 1/4. And radius r is given to be 1/12. Just substitute and simplify. That's all we have to do. X minus 1/2 the whole square plus y minus 1/4 the whole square is equal to 1/12 the whole square. बच्चों यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन आने वाला है. यहीं पे स्टॉप मत करो. आपको याद होगा मैंने ये लिख के दिया था x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. इस फॉर्मेट में लेकर आइए आंसर को प्रॉपर्ली ओपन करके, है ना? So open it. x² minus x plus 1/4 plus y² minus y/2
plus 1 by 16, am I right, is equal to 1 by 144. Let's multiply the entire equation by 144. Let's see what we get. So we get 144x square minus 144x plus 144 upon 4 अगर आपने किया तो you will get 36 plus 144y square minus 144 upon 2. If you do, you will get 72y plus 144 upon 16. If you get do, you will get 9. Right? Am I right? Am I right? Yes. Looks like. Chalo. Rearrange everything and then I think we can do something with it. 144x square minus 144x plus 144y square minus 72y. 36 plus 9 is 45 minus 1 will be 44 equal to 0. I can do one thing. I can divide the entire equation by 140. No. We can divide the entire equation by 4. What say guys? Not 144 but 4. Because 144 kya doesn't make sense. Let's divide it by 4. So we will get therefore एक दूसरा कलर ले लेते हैं बढ़िया सा. Yes. So we are going to get it equal to after dividing by 4. Shall I write it over here? Yes. So 144 divided by 4, 36x square plus 36y square minus 36x minus 2y, not 2, we are dividing by 4, am I right? So यहाँ पे क्या आएगा? 18y plus 11 equal to 0. This is the required equation. This is the required equation. Guys, हम लोग ने देखो यहाँ पे खत्म किया. If you notice the coefficient of x and x square and y square are equal. There is no xy term. तो इस तरीके से आपको आंसर को एंड अप करना है. ठीक है, यहीं पे मत स्टॉप करो. You simplify as much as you can and then try to bring it to the lowest possible numbers that you can. And this is the required equation of this circle. Check out. ठीक है, let's move ahead. Find the center and radius of the circle. Okay, again we have to find the center and radius, but ये circle थोड़ा सा कुछ दिख रहा है अलग सा. देखते हैं. 2x square minus x plus 2y square is equal to 0. This is the equation. If I take 2 common throughout the equation, I get x square minus x by 2 plus y square equal to 0. Just forget that 2, it will go to the other side. So therefore we have x square minus x by 2 plus y square equal to 0. अब इसको उसी फॉर्म में लेकर आओ यार. x minus h the whole square, y minus k the whole square equal to 0. Try to make a perfect square. So perfect square बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या add और subtract करूँ? आप बताओ मेरे को. Half into coefficient of x the whole square. So I'm going to add and subtract. Oh, I'm sorry, it's 1 by 60. So I'm going to add and subtract, add 16 on both sides. इसको perfect square बनाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, just 0 is enough. So next step I'll get, यहाँ से x आया, यहाँ से 4 आया and this minus sign. So it's x minus 4 the whole square plus y minus 0 the whole square is equal to 16 means 4 square. Compare it with x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. What am I getting? H is equal to 4, k is equal to 0 and r is equal to 4. So this is the required center and radius. Center is 4, 0 and radius is also equal to 4. बच्चा लोग मेरे को एक चीज बताना, h is equal to r. Your h is equal to r. How is this circle going to look like? थोड़ा सा प्रॉपर है ना, 4, 0 है तो ऐसा कुछ होगा. This is your center and this distance, this radius is equal to 4.
Circle is touching the y-axis at origin. This is a circle which is touching the y-axis at origin. Let's move ahead. Okay, just a second. I think we wrote here 1 by 16 and then we added 16 to the both sides. So it's ultimately not 1 by 16, but it's okay, we'll make the changes. So it's not that, it's 1 by 16. So I'm going to add 1 by 16 over here. I'm going to add 1 by 16. So if I add 1 by 16, definitely its root 1 by 16 का root क्या होने वाला है? 1 by 4. So it's x minus 1 by 4 the whole square is equal to 1 by 4 the whole square. Okay, so that's the only difference that's happening. Instead of 4, we have 1 by 4. यार 1 by 16 यहाँ पे तो लिख लिया, यहाँ आते आते 16 हो गया. मतलब जैसे हम करते हैं यार, एग्जाम में होता है ना अपने से भी कि हमने लिखा +2, फिर जब एक्चुअल में मतलब कैलकुलेशंस में आंसर आया +2, एक्चुअल लिखने जाते हैं माइनस हो जाता है. तो वही वाला सीन है, समझ लो. So yeah, 1 by 4, 0 is the center and 1 by 4 is the radius. This is exactly what we got. Let's solve one more question on this circle and then let's move to parabola. Find the equation of circle which is passing through 0, 0 and making intercepts A and B on the coordinate axis. Okay, so my circle is something like this. It's making some intercept A and B on the coordinate axis as well as it's passing through the origin. तो कुछ इस तरीके से है ना. ये डिस्टेंस अपन लिख सकते हैं. let us call this distance as A and this distance as B. So this point is going to be A, 0 and the other point is going to be 0, B. X-axis and your Y-axis, you know that. ठीक है. Okay, so how do I solve this? Find the equation. You want the equation. So बच्चा लोग अपने को ये इक्वेशन तो पता है. दिस इज द स्टैंडर्ड x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. We know that. WKT. We know that. Now since the circle is passing through a, 0, circle passes through a, 0. So will it satisfy the equation of circle? है ना, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह यदि आप a रखो, है ना, और y की जगह यदि आप 0 रखो और फिर इसको सॉल्व करो तो देखिए क्या मिलता है. देखो a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1. ऑल्सो सर्कल पासेस थ्रू 0, 0 ऑल्सो. एम आई राइट? सर्कल सेंटर ओरिजिन से भी पास हो रहा है. तो आपने अगर वो इक्वेशन में रख दिया, ये इक्वेशन में रख दिया आपने. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 में अगर आपने 0, 0 रखा तो व्हाट विल यू गेट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और रादर आई शुड राइट इट x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. x और y आप 0 रख रहे हो, so 0 minus h the whole square plus 0 minus y the whole square is equal to r square. So we get h square plus k square is equal to r square. h square plus k square is equal to r square. This is equation 3. Use equation 3 in 2. Use 3 in 2. What do we get? a square minus 2ah and h plus k की जगह मैं लिखूंगी r square. Simplify. A square is equal to 2ah. Cancel. We get h is equal to a by 2. H is a by 2. Substitute this h is equal to a by 2 in equation 3. Substitute h is equal to a by 3. Use 4 in 3. What do you get? K. K will be equal to b by 2. यार देख लीजिए यहाँ पे आपका सेंटर है h, k, right? So if your h is a by 2, your k will be b by 2. Once you have h and k, पूछा क्या है? Find the equation. h and k is there. Just substitute. You will get the equation. यहाँ पे h की जगह a by 2, k की जगह b by 2.
The question is solved. Have a look, have a look how it is. So this is how the diagram will look like. This is the equation that we obtained, h square plus k square equal to r square. h is equal to a by 2 is also something that we obtained. And similar तरीके से जैसे आपने a और a comma 0 substitute किया, you got h. In a similar fashion, you will get k b by 2. When you substitute x0 and y b, ये वाली पॉइंट को आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट k. Once you have h and k, radius is easily obtained. H square plus k square is equal to r square. So h square is a square by 2, k square is b square by 2 by 4 rather, है ना, because हम स्क्वायर कर रहे हैं, so it's 4 is equal to r square. So therefore r square is equal to a square plus b square by 4. ये मिला r square. h, k, r is given to you substituting everything in this equation. A by 2, b by 2 and everything. And you will get your final answer as this. It's not so lengthy, looking a little lengthy. Let me, if you want, I'll solve it just in a minute. Not even a minute. Chalo. X minus a by 2 the whole square plus y minus b by 2 the whole square is equal to a square plus b square by 4. जिसको थोड़ा लेंदी लगता होगा ना, कुछ नहीं है, देखो अभी कैसे फट से सॉल्व होता है. It's x square minus a plus a square by 4 plus y square minus b plus b square by 4 is equal to a square plus b square by 4. देखिएगा x square plus y square minus a minus b plus a square plus b square by 4 is equal to a square plus b square by 4. Cancel out and we get the equation. यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y है. Minus ax minus by equal to 0. This is the required equation. कितना टाइम लगा बच्चों? कुछ नहीं, 30 seconds is enough. This is the required equation. That's how we solve this kind of a question. Am I right? Let's move on to the conic section of parabola. क्या बोला मैंने? Parabola. चलो, what is a parabola? So the definition of next three conic sections, that is parabola, ellipse and hyperbola, is going to revolve around this statement. So try to understand this statement very carefully, because ये statement को ही थोड़ा सा आगे पीछे करके हम बाकी भी definitions बनाएंगे. So the definition says a conic section is locus of point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is in the constant ratio to its perpendicular distance from a fixed line. Okay, so there is a fixed point, there is a fixed line. They are saying the ratio of distance from fixed point to distance from fixed line is going to be constant, है ना. तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस. फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस. और फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. और ये जो कांस्टेंट रेशियो है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड उसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन. एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोन. Let us understand what I said through a diagram. Can you see this is your fixed point? This is your fixed point, focus. Can you see this is your fixed line, directrix? The distance between fixed point and P is PS. The distance between fixed line and point P is PM. Perpendicular distance, guys, perpendicular, not random distance, perpendicular. Now if I take a ratio PS upon PM, है ना, distance between focus and point upon distance between directrix and point, PS upon PM, that's called as eccentricity. So this is general, this is the definition for all the upcoming conic section. Now if your E is equal to 1, इसका मतलब if your PS is equal to PM, if E is equal to 1, we get a parabola. क्या मिलता है बेटा? पैराबोला मिलता है. If your E is equal to 1, we get a parabola. If your E is less than 1 and greater than 1, we get two other conic sections. We get two other conic sections which are ellipse and hyperbola. ठीक है? So the definition will remain same. ये definition को रख लो. क्या है? Locus of point. It is a locus of point. ठीक है? ये सारे locus, ये सारे points का locus, ये सारे points का locus.
locus of points, which moves in a plane such that its distance from fixed point is constant ratio to its distance from perpendicular line, fixed line. अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है. देयर आर सर्टेन अदर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पैराबोला. लेट्स अंडरस्टैंड दोस टर्मिनोलॉजीज. सो दिस इज अ फोकस, दिस इज अ डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन. नाउ a random point P which moves such that the ratio becomes constant. तो ये P को हमने बोल दिया h, k. ठीक है. Now it will form a locus something like this. अगर वो इस लाइन, इस ये जो कर्व बना है ना, इस पे मूव करेगा तो इस फिगर को हम बोलेंगे पैराबोला. हमने ये स्टार्टिंग में एनिमेशन में भी देखा. Now what are the different things? Now the line that I have drawn is known as the axis. Definition क्या है? Line passing, just a second, ये टेढ़े क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे ये रहा. A line passing through focus perpendicular to directrix is called axis. Is this line passing through the focus? Yes. Perpendicular to the perpendicular to the directrix. This line is perpendicular. Yes. So this line is known as axis of the parabola. Here it is x-axis. Here the axis of parabola is x-axis. Next, vertex. This point is called as vertex of the parabola. Here it is 0, 0, origin. So point of intersection of conic and axis. कहाँ पे आपका कोनिक सेक्शन और एक्सिस मीट हो रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स. ये 0, 0 कब होगा बेटा? ये स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में मैं बात कर रही हूँ. स्टैंडर्ड पैराबोला में ये वर्टेक्स 0, 0 होगा एंड एक्सिस x होगा. सो स्टैंडर्ड पैराबोला. We'll come to standard parabola in next slide, but let's understand. So second point done. Then we have any two points which are joining on a conic section is called as a chord. So line segment joining any two points is called as a chord. Next, very important, a chord which is perpendicular to the axis is called as double ordinate. अब आप ये भी एक chord ही है, it is joining two points but it's perpendicular to the axis, which is like this. इसको perpendicular है, it is called double ordinate. And last one, the most important one, when your double ordinate is passing through the focus, when your double ordinate passing through focus, it is called as latus rectum. So remember all these different sections of a conic very well. So here I come to standard parabola. The axis is your x-axis. The directrix is x equal to minus a. Focus is a, 0. Focus is a, 0, right? This line y, can you see this line y? It's passing through the vertex and touching the conic section, touching the parabola. Passing through the vertex, touching the parabola. This is called as tangent of the parabola. ये बन गया tangent. और tangent का इक्वेशन क्या है? x equal to 0. We know equation of y axis. Equation of y axis क्या होता है? x equal to 0. So that's the equation of y axis. ये जो vertex है ये 0, 0 है for standard parabola. Y square equal to 4ax. Directrix is x equal to minus a. X equal to minus a. So x equal to a. A जो है वो फोकस है एंड एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे, एट अ सेम डिस्टेंस टू द लेफ्ट वी हैव अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स, राइट? सो दैट्स योर डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए. ठीक है. लैटस रेक्टम कुछ ये होगा. दिस इज योर लैटस रेक्टम. लैटस रेक्टम के भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. सो दिस आर द लैटस रेक्टम. दिस इज योर फोकस s. देख लीजिए वर्टेक्स. दिस डिस्टेंस इज इक्वल. ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है. सो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस कितना होगा? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a. यहाँ पे a, यहाँ पे. सो टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 2a. Just note down all of them very well. Equation of latus rectum. Latus rectum is passing through the focus and perpendicular to the axis. तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x is equal to a. So x equal to minus a is directrix, x equal to a is latus rectum.
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बिकम्स 4a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये टोटल लेटस रेक्टम का लेंथ जो है वो 4a है. And if you ask the coordinates, let me mention the coordinates also. It's a comma minus 2a and a comma plus 2a. So y coordinate ऊपर 2a है, नीचे 2a है, above 2a, below 2a. So total becomes 4a as the length. X coordinate तो a है बच्चा, x coordinate is the focus, right? So these are the different things. Now there are other standard parabola. अब ये जो parabola था ना, it was y square equal to 4ax. Can you see a was positive, so a is on the right hand side. ये आपका x axis, ये y axis. तो a positive है, a यहाँ पे है. This is a parabola which is opening towards the right, also called as right-handed parabola. Next, अगर y square equal to minus 4ax है, मतलब आपका a क्या है, नेगेटिव है, so it's a left-handed parabola, minus a comma 0. Everything else will remain same. डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, बस सबका साइन चेंज होगा. x इक्वल टू पहले माइनस a था, अब हो जाएगा प्लस a, है ना. हर एक चीज का सिर्फ साइन बदलेगा, जहां पे भी a था वो दैट विल गेट रिप्लेस्ड विथ माइनस a. सो फोकस वाज इनिशियली a comma 0, नाउ इट विल बी minus a comma 0, राइट. डायरेक्ट्रिक्स वाज x इक्वल टू माइनस a, नाउ इट विल बी x इक्वल टू a. Just replace a by minus a. Have a look at the combined diagram. Right-handed, left-handed. Can you see? Length of latus rectum, यार length थोड़ी बदलता है. Length तो 4a है तो 4a ही रहने वाला है, चाहे जहां पे भी देख लो आप. ठीक है? Just remember. अच्छा, ये याद कैसे रखें मैम? y square equal to 4ax का डायग्राम कैसे बनाएंगे, या फिर minus 4ax? तो बेटा y देखो, y square, तो आपको ये चीज याद रखना है, whenever you have even power of y, it is symmetric along x axis. अच्छा, ये जो मैं डेफिनेशन दे रही हूँ ना, ये आपको बहुत काम आएगा 12th में भी. 12th में आप जाओगे, आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तब आप मेरा नाम लोगे, बोलोगे वर्षा मैम ने ये चीज बताई थी हमको. When you have even power of y, the curve is symmetric along x axis. ये देखिए, ये कर्व जो है x एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप मिरर रखो, सिमेट्रिक है ऊपर नीचे. इफ यू हैव इवन, सेम चीज, इफ यू हैव इवन पावर ऑफ x, इट विल बी सिमेट्रिक अलॉन्ग y एक्सिस, व्हिच इज योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला. मतलब यदि मेरे पास पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नाउ दिस हैज एन इवन पावर ऑफ x, तो ये कहाँ पे सिमेट्रिक होगा, अलॉन्ग y एक्सिस. तो ये ऐसे सिमेट्रिक, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, अपवर्ड. And if I have x square equal to minus 4ay, तो ये कैसे होगा, ये भी सिमेट्रिक along y axis, बट a नेगेटिव है बॉस, है ना, तो नीचे होगा फोकस नेगेटिव y एक्सिस की ओर. यहाँ पे a पॉजिटिव है तो फोकस ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, तो इसलिए नीचे. तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, डिपेंडिंग अपॉन योर a यू डिसाइड, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, है ना. बट मेजर थिंग, इवन पावर है y का, तो x के अलॉन्ग सिमेट्रिक, इवन पावर ऑफ x, so it's symmetric along y axis. Now this is the table that you should remember. कंपैरिजन में दिया है 4ax एंड माइनस 4ax के लिए, बस याद कर लो. वर्टेक्स तो सेम है दोनों के लिए. फोकस में देखो सिर्फ माइनस साइन फर्क हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स में माइनस साइन का फर्क है, लेटस रेक्टम में माइनस साइन का फर्क है, लेंथ सेम है. एंड पॉइंट्स में देख लीजिए, ये एंड पॉइंट्स था नॉर्मल राइट हैंडेड के लिए, लेफ्ट हैंडेड के लिए द एंड पॉइंट्स विल बी माइनस ए, जस्ट ए रिप्लेस विथ माइनस ए. जहां पे ए है माइनस ए है माइनस ए, राइट. 2a को नहीं चेंज करना है. आप बोलोगे मैम 2a का a भी माइनस कर दो, नहीं, मैंने क्या बोला, सिर्फ जहां पे ओनली सिंगल a है दैट विल बिकम माइनस ए. तो ये 2a को आप रिप्लेस मत कर देना माइनस 2a से, ना, दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है, सो इट्स a रिप्लेस्ड बाय माइनस ए. सो दैट इज योर, एक याद कर लो बस बच्चों, मेहरबानी एक याद कर लो ये वाला, बाकी तीनों अपने आप आपको याद हो जाएगा. कैसे, ये कंपैरिजन से, ये कंपैरिजन से. लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट शो यू ओनली डिस्प्ले. ओके, नाउ यू कैन से इट. सी द कंपैरिजन. फर्स्ट, राइट हैंडेड पैराबोला, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस वेरी वेल. डायरेक्ट्रिक्स है लेफ्ट में,
देन दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स होगा राइट में, सो x इज इक्वल टू a. दिस इज अपवर्ड पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा नीचे, सो y इक्वल टू माइनस a, नीचे. एंड दिस इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, सो डायरेक्ट्रिक्स होगा ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, सो इट्स y इज इक्वल टू a. These are the equation of directrices. यार लेंथ इज गोइंग टू बी सेम, सो ये कॉलम को क्या ही देखना है. फोकस देख लो, यहाँ पे a,0, यहाँ पे -a,0 लेफ्ट में, यहाँ पे y एक्सिस पे होगा फोकस, सो इट्स 0, a, एंड यहाँ पे भी y एक्सिस पे बट नीचे, सो इट्स 0, -a. इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोला है लास्ट कॉलम. इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब यहाँ पे x एक्सिस है, सो y इक्वल टू 0, x एक्सिस y इक्वल टू 0. The equation, this is the y axis, है ना. Axis क्या है? Y axis. So that is x equal to 0. Here also x equal to 0. So comparative study, comparative table study will help you a lot in understanding all the parabolas that you are studying. ठीक है? So here I am back. Let's solve a couple of questions on them and then we are done with this parabola today. We'll soon then start with ellipse and hyperbola, which is even more exciting. Find the coordinates of the focus, axis, equation of directrix and length of latus rectum for x square equal to 6y. बेटा ध्यान में रख, x square equal to 6y, ये कैसा होगा, मतलब हमेशा इट्स वेरी यूजफुल अगर आप डायग्राम बना लो, काम ही खत्म हो जाता है यार. So these are all standard parabola. x square equal to 6y. Even power of x symmetric along y axis. ऊपर या नीचे, बॉस पॉजिटिव है, ऊपर होगा. So this is how this curve is going to look like. मेरे को इतना आइडिया आ गया. तो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा नीचे की तरफ, फोकस होगा यहाँ पे. ये बेसिक चीजें हम लिख लेते हैं. ये y है, ये x है. हालांकि you don't have to draw diagram while solving, but I am showing you so that it becomes simple. This is the vertex 0, 0. This is the focus S. ठीक है. There will also be a latus rectum like this, which is L dash. Right. So now x square equal to 6y. Compare it with x square equal to 4ay. What is 4a? 6. So a का वैल्यू क्या आया? 6/4 which is 3/2. राइट. तो अभी पूछा क्या है बच्चा? फोकस. सबसे पहली चीज आपको पूछी है फोकस. तो फर्स्ट थिंग फोकस. फोकस ऑफ सच अ पैराबोला. फोकस ऑफ सच अ पैराबोला क्या होता है? इट्स 0, a. कैन यू सी? है ना, ये फोकस क्या होगा? 0, a. सो इट्स 0, 3/2. फिर ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू -a बिकॉज इट्स कटिंग द y एक्सिस. तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन इज गोइंग टू बी y इक्वल टू -a. माइनस क्यों? क्योंकि नीचे है बॉस. y एक्सिस, y x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस को कट कर रहा है, सो इक्वेशन इज y इक्वल टू -a. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी है. सेकेंड थिंग, एक्सिस ऑफ पैराबोला. एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है? A line which is passing through the focus and perpendicular to the directrix. So y axis is the axis. So equation है x equal to 0. This is axis of parabola, right? X equal to 0. Then we have equation of directrix. Very simple. Equation of directrix. It is y equal to -a, which is y equal to -3/2. Your a is -3/2. Next. Length of latus rectum. Length of latus rectum is 4a, which is 4 into 3/2, which gives you 2 3s are 6. So length of latus rectum is 6. Generally, this is your length of latus rectum. 4a, to direct comparison 6. This was your question. I hope you got this very clearly. We can try it out on more questions. Find the coordinates of focus, axis of parabola, equation of directrix and length of latus rectum for the parabola y square equal to 10x. चलो बच्चों जल्दी से इसको ड्रॉ करके बताओ. y square is equal to 10x. Even power of y symmetric along x axis. x axis के along राइट या लेफ्ट मैम? बॉस ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो अपना फोकस पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे. दिस इज हाउ इट इज. ये अपना डायरेक्ट्रिक्स लाइन डी, ये फोकस S, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. दिस इज 0, 0 द वर्टेक्स. अब आप कंपेयर करोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, तो आपको 4a इक्वल टू 10 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 5/2. राइट. सो योर फोकस इज a, 0
Directrix will be x equal to minus a. Let's find out whatever is asked. First thing is focus. So focus S a comma 0 is equal to 5 by 2 comma 0. ठीक है? Axis of the parabola, a line which is passing through focus and perpendicular to directrix. So it is the x-axis whose equation is y equal to 0. Third, equation of directrix. Equation of directrix. X equal to minus a is 5 by 2. Length of latus rectum, length of LR is 4a. Just compare this 4a with this. You get 10. So length of latus rectum is 10 units. That's how we solve such questions, guys. Just compare it. Table याद रहे, formula याद रहे, तो कुछ भी नहीं है. We just need to remember the formulas. Nothing else. Find the equation of parabola that satisfies the condition. जहाँ पे focus दिया है S is 0, minus 3 and directrix का equation है y equal to 3. अच्छा, सबसे पहले फोकस जो है 0, minus 3 है, मतलब फोकस इज लाइंग ऑन द y एक्सिस. तो ये जो पैराबोला होगा ना, इट विल बी समथिंग लाइक x equal to 4ay और x square equal to minus 4y, बिकॉज फोकस है y एक्सिस पे. तो या तो ये अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड, अब वो डिसाइड करना होगा अपने को. तो ये देखो, जब आप इसको 0, a से कंपेयर करोगे तो a क्या मिल रहा है, -3. तो जो फोकस है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है फोकस. तो ये कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड. यस, आर यू गेटिंग दिस? दिस इज योर फोकस 0, a. दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू a. दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका वर्टेक्स है 0, 0. तो इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का है. So it is of the type x square is equal to minus 4ay. Right. Substitute, अपने को a की वैल्यू चाहिए. इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए तो अपने को a का वैल्यू चाहिए. What is x? And y. So y is equal to 3 given to us. Y is equal to 3 is given to us. a पता है अपने को, a is minus 3. So x square is equal to minus 4 into 3y. Therefore x square is equal to minus 12y. यही पूछा था बच्चों? Yes, that's done. x square equal to minus 12y. We identified कि भाई ये इक्वेशन होना चाहिए, ये दोनों में से. फिर दोनों में से नेगेटिव वाला लिया बिकॉज फोकस नेगेटिव साइड में है, डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड में है. डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है, फोकस नीचे है. और फिर हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया a का वैल्यू एंड वी गॉट दी प्रॉपर आंसर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12y. कैन यू सी इट ओवर हियर? वेरी नाइस. चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सैटिस्फाइज द कंडीशन. वर्टेक्स 0, 0, एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, 0 है एंड फोकस -2, 0 है. बहुत ही इजी. फोकस नेगेटिव साइड में है एंड -2, 0 है. तो इट इज ऑफ द टाइप a, 0. तो जब आप कंपेयर करोगे a क्या मिलेगा, -2. a है -2. अच्छा, अब ऊपर या नीचे, तो -2, 0 मीन्स इट्स लाइंग ऑन दी x एक्सिस. इट्स लाइंग ऑन दी x एक्सिस. फोकस लाइज ऑन दी x एक्सिस एंड नेगेटिव साइड में. सो इट्स -2, 0 समथिंग लाइक दिस. ये है आपका पैराबोला. समझे क्या यार? लेफ्ट साइड मैंने कैसे ड्रॉ किया? मैंने देखा यार फोकस है -2, 0, x एक्सिस पे लाइव करेगा. x एक्सिस पे लाई करेगा नेगेटिव साइड में, तो ये फोकस है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस a. राइट, x इक्वल टू a, सॉरी, x इक्वल टू a. पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. कूल. इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सिंस वी नो इट्स अ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इट्स इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4. a क्या है, 2 and x. So y square is equal to minus 8x. This is the required equation. a is 2 by the way, not -2. If I compare it with -a, 0, है ना.
S is minus 2 comma 0, so I am comparing it with minus a comma 0. I get a to be equal to 2. And that's how I get the equation of parabola y square is equal to minus 8x. मैं आपको डायग्राम्स के साथ बता रही हूँ so that पिक्चर क्लियर होते जाए दिमाग में. It's a left-handed parabola. And one last question of the day, guys. Find the equation of parabola that satisfies the following condition. Vertex दिया है, point दिया है, and axis दिया है. Axis is along y axis. ठीक है, मतलब जो जिसके along symmetric है, that is called as the axis. Axis मतलब along which the curve is symmetric. So it is symmetric along the y axis. Upward या downward idea नहीं है. Upward या downward अभी तक तो पता नहीं है, but निकाल सकते हैं. Also your curve is passing through 0, 0 and 5, 2. बेटा 5, 2 होगा कहाँ पे पॉइंट? यहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 5, 2. हाँ या ना? Both positive, x, y positive, first quadrant. So my curve definitely has to be like this. Upward या downward में डाउट था. अब 5, 2 से पास हो रहा है तो यार नीचे तो हो नहीं सकता. It has to be upward. So it is of the form y square is equal to, I am so sorry, it is of the form x square is equal to 4ay, है ना? अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव. x square is equal to 4ay. ये फॉर्मेट है. यहाँ पे फोकस होगा. अब ये a की वैल्यू मिले तो मिले कैसे? a की वैल्यू मिले तो मिले कैसे? Since the equation curve is passing through 5, 2, since the curve is passing through 5, 2, therefore it will satisfy equation. It will satisfy the equation of parabola. So if I substitute x as 5 and y as 2 in the equation of parabola, what will I get? 25 is equal to 4a and 2. So we get a is equal to 25 by 8. A मिल गया. Question था find the equation. Therefore equation of parabola क्या है? It's x square is equal to 4 into 25 by 8y, that is x square is equal to 4 1s are 4 2s are 25 by 2y. X square is equal to 25 by 2y is the required equation. I hope you can see this. समझे बच्चा लोग? समझे हमने क्या किया? तो 5, 2 का दो इंपॉर्टेंस था. एक तो उसने ये बताया मुझे कि वो अपवर्ड है. सेकंड चीज उसने मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दी, राइट? तो वर्टेक्स से पास हो रहा था, y एक्सिस के अलाउंग सिमेट्रिक था, तो अपवर्ड डाउनवर्ड का फंडा मिल गया. अपवर्ड इसीलिए बिकॉज 5, 2 से पास हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? So this is all about parabola, guys. Take a screenshot of this and do solve total 10 questions we have done in a day, which means a lot. यार वन शॉट है ये, मजा आ गया मेरे को. जल्दी से ये सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से एक्सरसाइज 11.1 11.2 को प्रैक्टिस करो. अभी के अभी 11.1 11.2 प्रैक्टिस करो और देखो आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आते. मैम हैज सॉल्व्ड ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू. ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी. ट्राई टू सॉल्व देम एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना बच्चों. You will be commenting the answer so that I can display your name very proudly in the next lecture. Very proudly I'll display your name. So yes, today we did the introduction, very beautiful introduction of conics, then circle and parabola. That's how we finished. So 11th standard every Monday, Wednesday, Friday. आज का कोटा हुआ खत्म. Wednesday को हम करेंगे episode 2 of conics एंड फ्राइडे को हम करेंगे मेगामेंटी ऑन कोनिक्स. सो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये करना ही है. प्लीज डू दिस, डू नॉट लीव दिस एज एन ऑप्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE पॉइंट ऑफ व्यू. सो मेगामेंटी ऑन फ्राइडे, क्लास 12 ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे हम मिलेंगे. सो अभी जो कल ट्यूजडे है उसमें होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का मेगामेंटी. तो बच्चों आ जाओ सभी लोग, डू नॉट फेल, विदाउट फेल मेगामेंटी में आ जाओ ट्यूसडे को. उसके बाद हम शुरू करेंगे वेक्टर्स वन शॉट, वेक्टर्स का वन शॉट थर्सडे को एंड सैटरडे को वेक्टर्स का मेगामेंटी. सो ये वीक का मैंने पूरा शेड्यूल दे दिया है, देख लीजिए. नेक्स्ट वीक से दैट इज 7 दिसंबर से 12th स्टैंडर्ड जनता के लिए कुछ एक्साइटिंग आएगा.
एंड 11th स्टैंडर्ड जनता हम वन शॉट में तोड़ फोड़ मचा देंगे। ठीक है गाइस, सो सी यू ऑल, डू कमेंट, डू सॉल्व द होमवर्क, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मजा आ जाएगा मेरे को कमेंट रीड करके, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।